Welcome everybody. We'll start within few minutes. Just give me confirmation inside the chat section that am I audible to you. Thank you so much for joining. Welcome everybody. Yes, Sagar ji is saying yes. Tia, thank you so much. So we'll start soon. Yes, good morning Janvi. Good morning Prasad. Good morning all of you guys. Wait for a few minutes. Our team member is going to connect soon. Yes, audible. Thank you so much for staying here. Yes, good morning. Irfan Sayed ji, mail live sessions will be available in the new portal EDU. Have you logged in on edu.skillcoach.in? Irfan Sayed ji. Good morning, Budhe. Good morning, Utkarsha. All of you, good morning. Thank you so much for joining. Yes, good morning to all of you. I think बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ यार ये क्या हो गया मेरा अवतार तो नहीं बन गया मैं good morning Irfan Sayed ji. My progress is not showing in yeah, you'll get the all the like certification, old portal certification will be uploaded very soon Irfan ji, do not worry. ओल्ड पोल्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे आ जाएंगे. पहले मैं मेरे कैमरा को फिक्स तो कर दूँ. इको भी आ रहा है. इको को भी फिक्स कर लेता हूँ. आज क्या टेक्निकली सारा लगता है गड़बड़ हो गया. इको आ रहा है क्या मुझे बता दो. आवाज तो प्रॉपर आ रही ना. कैमरा छोड़े यार, कभी अवतार जैसा मैं दिख रहा हूँ. मैं उसे फिक्स कर दूंगा. यस. वॉइस नॉट ऑडिबल समवन इज सेइंग. ऑडियो इज गुड कुछ लोग कह रहे हैं. यस, वॉइस क्लियर. ठीक है यार, मैं तो पूरा माइक नजदीक पकड़ के बोल रहा हूँ. Voice is clear. Yes, audible. Thank you so much. Thank you so much. So, meanwhile, our trainer is joining here. Yeah, I think Achal ma'am is joining within few seconds. We will start our today's session. Thank you so much, Achal ma'am, for joining. Thank you so much, sir. And I'm extremely sorry. There was some network issue
and I was not able to join, but yes, and now I'm here. Thank you so Okay. much. It's okay. Over to you now. You can continue. Yes. So, good morning, everyone. I hope everyone's Sunday is going fine. Again, apologies from my end for being late today. Um, can you all hear me? Can you all see me? Can you just not see me? My camera has still some issues. I'm just rectifying it. But can you just confirm if you are all able to hear me properly? Yes, perfect, perfect, perfect. Thank you. Okay. How many of you are attending my session for the very first time? Can I please confirm that once? Okay. A lot of you are coming for the first time. Perfect. Okay. I want to understand from your side. So, when we say Naukri and when we say profile optimization, what do you think are we going to cover for the first time? आप लोग को क्या लगता है? और हाँ, मैं पूछना भूल गई. Are you all comfortable with Hindi and English both? English is fine? Yes? Okay, perfect. ठीक है. So when we say we are going to talk about profile optimization about Naukri.com, what do you feel we are going to do today? Someone is saying LinkedIn is not enough. I wouldn't say LinkedIn is not enough or Naukri is not enough. ये हम नहीं बोल सकते. All the platforms have a lot of different features that they cover. बट कुछ चीजें हैं जो Naukri.com में अच्छे तरीके से प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है एंड इवन रिक्रूटर्स दे डेफिनेटली गो थ्रू लिंक्डइन एंड द लिंक्डइन जॉब फीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट बट स्टिल Naukri डू हैव अ लॉट ऑफ बेटर फीचर्स व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जो हम आज डिटेल में देखेंगे. I have my own profile also on Naukri, so I will show you my profile also and how the job postings come over there ताकि को practically दिखाई भी दे कि कैसे चलता है Naukri.com. Okay, so a lot of replies, resume optimization and profile making complete, research and job application in relevance to skill, field and resume alignment. Great, ठीक है. So all of you are obviously aware about the structure, but जिन जिन लोगों ने ये सेशन पहली बार जो अटेंड करने आ रहे हैं, since a lot of you are here और हमारा एक स्ट्रक्चर है तो 10-15 minutes of course we definitely do a lot of practical वर्क ऑल्सो. तो मैं एआई का भी यूज करूंगी जिसमें हम एआई प्रॉम्प्ट्स डालेंगे और हम प्लेटफॉर्म के बारे में और जानकारी लेंगे. मैं आपको नौकरी प्रोफाइल भी दिखाऊंगी एंड आई डू हैव माई प्रेजेंटेशन ऑल्सो विद मी जस्ट फॉर सम बुलेट पॉइंट सो दैट आई डू नॉट मिस एनी पॉइंट. बट मैं बीच बीच में अपना चैट जो है वो डिसेबल करने वाली हूँ सो दैट आई डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डू नॉट मिस एनी ऑफ योर मैसेजेस. सो वेन एवर I will be like available from there from the PPT. I will come back to your messages and see your messages also. तो अभी मैं अपना screen share करती हूँ in a minute and once I do that, please confirm if you are able to see my screen. Just a second. Perfect. So let me just quickly share my screen. Hmm. Sick. तब तक अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेरी चल रहा है विच यू वांट टू क्लियर इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ प्लीज फील फ्री. 1 second. Yes.
Can you please repeat again? Which part? Can you please? Okay. I haven't really started the presentation yet, so you haven't missed anything. Don't worry about it. एचआर को एआई कितना आना जरूरी है? आई हैव डन नौकरी मास्टर रिक्रूटर सर्टिफिकेट. आई फील एचआर शुड नो एआई टू एन एक्सटेंट. जब वो जहां पर भी एआई हमें जज करना है कि ये एआई से लिखा गया है, या फिर हाउ मच एवर इज important to understand plagiarism or AI checks and all of that. I think the basics should be known by the HR so that he or she is able to judge it better. Apart from that, the more you know, the better. So don't worry about that. Please feel free to ask your questions. There is some issue from my end today. I'm extremely sorry about that. Are you all present on Naukri.com? Are you all there? Do you have your profiles there already? Yes, okay. How do you use it at the moment? Can you confirm that? Like आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं अभी? Profile is not complete. Daily update. Daily update as in क्या update करते हैं? I have no account. It was there 15 years ago. Wow, that's a long, long time. Are you able to see my Chrome? Yes. There is some problem with the presentations app. उसकी वजह से थोड़ा problem हो रहा है. But I can also show you how I created this presentation. That will be an add-on. Can you see my screen? Yes. No? Okay. Let me reshare. Share Chrome. Okay. One second. Yes. Yes. Okay. You're able to see the Claude screen, right? Is it visible? So we are just going to follow this as a structure just to understand the basic parts of it. And then I will take you to even ChatGPT to give prompts, how to give prompts to get the right result. And I will also take you to my Naukri profile. So let's just go there, and I will also disable the chat section for now so that I do not miss on any of your points. So let me just quickly disable it. No one. Perfect. Perfect. So yes, without any further ado, let's just get on to the PPT. And as I mentioned, मैं PPT सिर्फ इसके लिए बनाती हूँ ताकि हमारे पास points हो. There is nothing more or less about it. So profile optimization mastery session, we will be able to understand how to optimize our profile to its absolute best ताकि हम visible हो, हमारे details भी updated हो. The very first topic is the session roadmap, why Naukri matters.
So it is majorly, there are a lot of different platforms like Indeed, Monster Jobs से जो convert हो गया, and there are like IIM jobs and a lot of different platforms. But still, as per the analytics and as per the recent survey as well, recruiters view mostly your profile on Naukri.com, and they definitely would love to see your profile somewhere other than LinkedIn as well. LinkedIn तो एक professional platform है ही, but how you are maintaining your profile on the Naukri platform also matters a lot. Second, how the platform works, we will see how algorithm is working and how profile scoring works. जैसे आपने LinkedIn, बहुत सारे लोग अवेयर हैं, इसलिए मैं बार बार LinkedIn का भी एग्जांपल ले रही हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम देखते हैं कि कभी कभी carousels वर्क बेटर, समटाइम्स टेक्स्ट फॉर्मेट्स वर्क बेटर एंड ऑल ऑफ दैट। तो एग्जैक्टली लाइक दैट इवन नौकरी हैज सम काइंड ऑफ algorithm कि किस टाइप का प्रोफाइल बेटर रिएक्ट करता है, एंड हाउ डू यू मैच इट विद द काइंड ऑफ रोल्स यू आर लुकिंग फॉर। हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेडलाइन एंड बेसिक्स, the first impressions. Whenever you go to someone's profile, the first thing you see is their profile photo, their headline, and all of these things. That is why how your first impression matters, how the basic stuff, the small things, जो हम कई बार ऐसा होता है कि डिटेल में जाने की जगह पे, मतलब हम डिटेल में ज्यादा फोकस करते हैं, एंड व्हाट वी स्किप इज द बेसिक बेसिक स्टफ। Skills and resume, your resume has to be updated over there, and it should reflect the same thing as your LinkedIn, as your resume is reflecting your Naukri profile also. And आपके स्किल्स, बिकॉज स्किल्स आप ऑफ कोर्स मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे में इन अ पर्टिकुलर लाइक स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, बट स्टिल नौकरी हैज अ गिवन डेडिकेटेड सेक्शन अबाउट skills also, so you need to take care of that as well. Experience and education, so these are all the sections which are already there on your resume as well. You just have to replicate it and give it a proper weightage on your Naukri profile. विजिबिलिटी सेटिंग्स बहुत सारे होते हैं उसमें, प्रिवेसी सेटिंग होते हैं, रिफ्रेश ट्रिक्स, अलर्ट्स, कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग आउट फॉर एन अकाउंट मैनेजर रोल फॉर एग्जांपल, तो वो डेजिग्नेशन जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट। तो हम लोग कहाँ पर थे? वन सेकेंड, लेट मी गो टू माई क्रोम अगेन। 1 second, यस। सो अगेन विजिबिलिटी सेटिंग्स, कि हमें किस तरीके से अपने विजिबिलिटी को मेंटेन करना है, एंड देन एक्शन प्लान एंड Q&A। आफ्टर अपडेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो भी हमारे सेक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसको करने के बाद हमें क्या करना है, एंड ऑफ कोर्स वी विल डू द Q&A। हाउ आई मोस्टली वर्क एंड फंक्शन इज, मैं हमेशा Q&A को लास्ट में नहीं रखती हूँ। आई ट्राई टू कीप Q&A आफ्टर फ्यू सेक्शंस, ताकि आपके डाउट्स और क्वेरीज भी सॉर्ट होते रहे, लास्ट तक के लिए रखे ना रहे। दैट्स हाउ आई बेसिकली फंक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन। वाई योर नौकरी प्रोफाइल इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एसेट, एंड जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने ब्लंटली सिर्फ होता है ना ओवर द इंटरनेट नहीं सर्च किया है। आई डिड माई काइंड ऑफ रिसर्च ओवर हियर एंड आई कैन शो इट टू यू, लाइक इधर मैंने अपना रिसर्च किया है लेफ्ट में, एंड आई हैव गॉटन डेटा विच इज बैक्ड बाय एनालिटिक्स एज वेल। सो हम सिर्फ ये बोल नहीं रहे हैं, हमें डेटा से मालूम चला है कि एवरेज रिक्रूटर स्कैन टाइम पर प्रोफाइल इज जस्ट 6 seconds, विच इज काइंड ऑफ स्कैरी, बिकॉज 6 सेकेंड ही मिलते हैं अपने आप को हमें प्रूव करने के लिए, एंड दैट्स हाउ एन एवरेज प्रोफाइल इज बीइंग जज्ड ऑन। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन से हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट वी गेट द वेटेज वी रियली डिजर्व। देन रिक्रूटर्स एक्टिवली यूज नौकरी, दैट इज लाइक देयर, कि रिक्रूटर्स जो है वो नौकरी, लिंक्डइन, ये सब तो बिल्कुल यूज करते ही करते हैं, देर इज नो डाउट इन दैट। एंड देर आर 3 million प्लस रिक्रूटर्स हु आर यूजिंग दैट। सो जस्ट इमेजिन कि आप का भी प्रोफाइल जो है वो नौकरी पर देखा जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है।
then jobs are never publicly advertised, filled via database search, and this is 70% of the times. So a lot of times आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये रोल तो ऐसा खुल ही नहीं रहा है इस जॉब में, या फिर ये कंपनी इस टाइप का रोल नहीं निकाल रही है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यू कम अक्रॉस अ रोल, यू मे बी सेव इट एंड यू फील लाइक इसको हमें बाद में फिल करना है, बट बाय दैट टाइम द रोल इज नॉट देयर एनीमोर, और वो इंटरनली भर लेते हैं, उसको फिल कर लेते हैं, या फिर डेटाबेस का जो सर्च होता है उनका, या फिर दे हैव ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड फ्यू roles in advance कि whenever they will need they will recruit those kind of people. So this is all what is happening in the background, and in the outside world we just feel like कि ये टाइप का रोल तो आ ही नहीं रहा है, या फिर मुझे इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. Then 5x 5 गुना ज़्यादा more callbacks for keyword optimized profiles. If your profile has the right keywords which you are searching for, which you are targeting for, you are someone who will tend to get 5x more calls. So that is like definitely mind blowing कि हमारी probability 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी if you are doing the right thing. Now, quick poll. So I will come back to you now. I will definitely ask you questions, but I do have like these three questions which I need answer for. ABC करके हम आपसे पूछते हैं, but let me come back to you all again. And I have enabled the chat section. So yes, you can chat with me right now. My very first question is, how many of you are actively looking for a job right now? A. Yes, yes, no, me, anyone? Okay. No, yes, me, A. Perfect. I think majorly a lot of you are looking for actively looking for jobs. Perfect. Now, the second question is open for job opportunities, passive, as in if you get a good opportunity, you will take it, something like that. How many of you are available for that? You can write B in that case. Yes. Actively, not act actively, but if you get a chance, you might take it. Okay, perfect. And the third category of people are never updated my profile. If you are someone who falls in that category, it's fine. It's fine. Just tell me. See, never updated your profile. Just made it like for some reason, but never got a chance to update your profile. Okay. Only I can see your messages, so feel free to be honest. Update occasionally. Okay. ठीक है. बहुत सारे लोग हैं उस कैटेगरी में जो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अपडेट ही नहीं किया है. Okay. So we have like mixed amount of people right now. We have 100 plus people joined in with us, and we have all three categories: someone who is actively looking, someone who is passively looking. If you get something, you might take it, and then there is a category who do not pay a lot of attention in updating the profile. Got it. ठीक है. Till now, are you aware or are you now able to understand the agenda of today's session? Everything is clear? कुछ बहुत फास्ट जा रहा है, कुछ अनक्लियर है, यू विल फील फ्री टू शेयर इट if there is anything which is unclear. Clear? Okay, most of it is clear. Clear, all good, perfect. Thank you so much. I will again disable the chat section now. Perfect. And let me go back to my screen. Yes. Okay, so now this part is clear when we saw about the analytics, and we also saw the three categories we all fall into. Now, let's understand the platform in a bit better manner. So, how recruiters find you on Naukri? Recruiter logs in, they have their different kind of a Naukri recruiter portal where they have different kind of like features available because they are recruiters, of course, just like how LinkedIn has this feature. Now they set filters. So whatever role they are looking for, जिस भी role के बारे में वो जानकारी चाह रहे हैं, या फिर जिस department में वो recruit कर रहे हैं, so those kind of roles. If you see the skills आपका कोई भी JD देख लीजिए उठाकर job description, so you will see job description, you will also see a lot of skills around that जो उस job के लिए चाहिए होता है. Experience, location, salary bracket. So everything should go well. और सबसे बड़ी irony ये है कि whenever we are also searching for any kind of job, we also have these kind of filters attached to us. हम भी जब
कहीं पर भी जॉब सर्च करते हैं, सो वी डू अप्लाई दीज फिल्टर्स, सो वी सी सॉर्टेड रिजल्ट। वो जो ओशन ऑफ रिजल्ट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें वो मिल जाता है। एंड द सेम थिंग इज डन बाय रिक्रूटर्स ऑल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ इट। Database search. So once you apply all of these filters, you will see the database, which is Naukri rank profiles by keyword match plus recency. कीवर्ड मैच होना चाहिए, जो भी हमें स्किल्स चाहिए वो सब हमें उस प्रोफाइल में दिखने चाहिए, प्लस हाउ रीसेंट योर प्रोफाइल इज। एंड दैट्स व्हाई आई आस्क द थर्ड क्वेश्चन विच सेड कि हाउ ऑफन डू यू रियली अपडेट योर प्रोफाइल। अगर रीसेंट होता है वो, तो उसकी रैंकिंग ज्यादा बेटर होती है। Now, after doing all of this, what they see is top 20 profiles. Now, the competition is so much that आपके तरीके के जो प्रोफाइल होंगे वैसे हजारों प्रोफाइल है मार्केट में, बट द probability of being chosen and be among those 20 profiles is so less. So they just get to read only top 20 profiles. And sometimes if the if the competition is even more, they get to see just 10 profiles or 15 profiles or just top 5 profiles if they have different portals available for themselves. And then clicks your profile is 6 seconds to impress, what we already discussed. So if they tend to like click on their profile, you just have the first 6 seconds to impress them to your core. So this is what the flow looks like. They have their own portal, they do search some filters, they apply the filters, they get a database, they only get to see the 20 profiles, and then if they get impressed, they will click on your profile and just 6 seconds to impress, otherwise they will skip through your profile. So this is the flow. Now a profile strength score is what it means. So this is what recruiters do, and the next part is what how we can improve our profile. So basic is 0 to 40%, which is invisible to most searches. अभी हम जाएंगे अपने प्रोफाइल में, so we will get to see कि वहां पर अ स्कोर इज गिवन टू आवर प्रोफाइल, जो हमें naukri.com ही देता है कि आपका स्कोरिंग कैसा है, आप कितना बेटर हो उधर। तो बेसिक इज 0 to 40%, विच इज इनविजिबल टू मोस्ट सर्चेस। गुड इज 41 to 70%, सो अपीयर्स बट रेयरली ऑन पेज 1। वो दिखेगा बट कहीं ना कहीं वो पेज 3 में, पेज 4 में, मे बी अगर कंपटीशन ज्यादा है तो पेज 10 में जाकर आपका प्रोफाइल कहीं छिप जाएगा। और एक्सेलेंट हुआ तो 71 to 90%, विच इज स्ट्रांगली विजिबल एंड रिक्रूटर्स कॉल इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उनके कॉल करने की। एंड सुपरस्टार इज द 91 to 100% प्रोफाइल, जो टॉप रिजल्ट में आएगा और मैक्सिमम कॉल बैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द ब्रैकेट जो हमें देखना है। ऑफ कोर्स वी आर टारगेटिंग टू बी समवेयर among like the excellent or the superstar profile, and we are working towards that, उसके लिए हम आज मिले हुए हैं। Now, an AI prompt is I want to score 90% plus on my Naukri profile. Ask me 5 targeted questions about my background, one at a time, then tell me exactly which sections to fill and what to write. अभी इसको इस प्रॉम्प्ट को करने के लिए आई फील वी नीड अ बिट मोर इंफॉर्मेशन, राइट? और अगर इफ आई कम बैक टू यू अगेन एंड आई आस्क यू इफ यू रियली वांट मी टू गो थ्रू दिस, बिकॉज अगर मैं ये चालू करूंगी तो आई विल टेक सम टाइम ऑल्सो टू गो डीप डाइव इन टू दोज 5 क्वेश्चंस। बट हाउ आई बेसिकली फंक्शन इज आई विल नॉट जस्ट गिव दिस प्रॉम्प्ट, बिकॉज एआई को मेरे बैकग्राउंड के बारे में कैसे मालूम चलेगा। I will give my LinkedIn profile to the AI and then I will ask this question. So I'm coming back to you so that I can see you and I can get to converse with you. Just give me a second. Yes, the chat section is available. So let me know if you want me to give this prompt to AI or and really ask these questions so that you also get some clarity. Should we do that? Let's do that together. Yes, I can see a lot of yeses. Perfect. How many of you already have your LinkedIn profiles? Because we are going to use the LinkedIn profile right now. I'll show you how to do that. Okay. So almost everyone has their LinkedIn profile. Now I will show you how you can actually use your profile and then answer these questions perfectly. Okay? Great. Can you confirm if you can see my LinkedIn right now?
Can you confirm it once? Are you able to see my LinkedIn? Perfect. Are you able to see the first post by Anjali Pandey? Yes. Okay. 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 So I will show you. I must say that you must be aware about this feature, but still, अगर किसी को भी नहीं पता है इस feature के बारे में, तो I'll just tell you now. So this is how it works. You click on your name, then you click on view profile. Here in the resources section, you see an option which says save to PDF. ठीक है? So now a profile one PDF has been saved here. Now I will just go to ChatGPT because I know a lot of you people have access to ChatGPT और इसके लिए मैं ChatGPT के पास ही जा रही हूँ. Now, can you confirm if you're able to see my ChatGPT? Yes. Perfect, perfect, perfect. Okay, let's stop. Let's go here. So, if you're able to see ChatGPT right now, I will share my profile. So, मैं यहाँ पर add पे जाऊंगी. मेरा profile है यहाँ पर. मैंने उसको share किया. And I will ask, analyze the attached profile properly. अगर आपने ये एक्सरसाइज पहले भी किया हुआ है इट इज फाइन. आई एम जस्ट टेकिंग इन टू अकाउंट कि अगर मैं चैट जीपीटी में फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा अकाउंट है, मैंने अपना प्रोफाइल शेयर किया है, व्हाट ऑल थिंग्स विल आई आस्क. सो एनालाइज द अटैच्ड प्रोफाइल एंड confirm if you are able to read it. Let's see. Yes, I'm able to read and analyze the uploaded profile successfully. एंड देन उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है हमारे बारे में. ठीक है. अब जब हमें पता है कि लिंक्डइन को हमारे सॉरी चैट जीपीटी को हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में आइडिया है, मतलब हमारे प्रोफाइल के बारे में उनको पता है सब कुछ. नाउ वी विल आस्क दैट सेम क्वेश्चन विच वी वर सपोज टू आस्क. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? लेट मी जस्ट कॉपी दैट. यस, वन सेकेंड. कॉपी एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर. Okay, it is not pasting the. ठीक है. I want to score 90% on my Naukri profile. It's the same thing. Let me just paste. फाइन. तो मैंने आपको जो आपको प्रॉम्प्ट दिखाया, मैंने वही चीज यहाँ पर पेस्ट करी है. Ikra is asking when session will end. Whenever you say Ikra. Okay. Um, कुछ लोग पूछ रहे हैं how to download your profile. I'll again go to LinkedIn. Confirm if you are able to see my LinkedIn, please. Yes. Okay. So here, when you go to your own profile, you will see something called resources. Click on resources and then there is a option called save to PDF. ठीक है? Okay. I'll share the prompt here. One second. You're asking for the prompt. आप साइड बाय साइड भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. I have, let me share it with everyone. So, yeah. I just pasted the prompt in the chat section just now. ठीक है? अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो डू द सेम. Are you able to see the prompt? All done? I have shared it with everyone. Just give me a second. I'll share it again. Okay, now? Yes? Okay. Copy the prompt. Perfect, 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 perfect. Now let's see कि हमें ChatGPT क्या बोल रहा है. Are you all excited to see? 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 Are you all
Great. Let's go to the Chat GPT platform again. I'm sharing my tab, and this is what we get. So, great, I'll help you optimize your Naukri profile strategically so it becomes ATS friendly, recruiter search optimized, strong for marketing plus branding plus AI focused roles. And then it says, if I'll ask you 5 targeted questions one by one, after your answers, I'll tell you exactly which Naukri sections to fill and all of these things. So question first, जो उन्होंने मुझसे पूछा है, is what kind of roles are you targeting most right now? और फिर इन्होंने ये भी हमें ऑप्शंस भी दिए हैं so that we do not get confused and we choose the closest option. So maybe I'll say corporate communications, और मैं साइड बाय साइड यहाँ पर ऑप्शन लिखती भी जा रही हूँ ताकि फिर मुझे बार बार उसको गो थ्रू ना करना पड़े. So my first question's answer will be corporate communication. Also, it is telling me to tell it my preferred job title, preferred salary, preferred cities and countries, and whether you want remote, hybrid, or on-site role. तो हम लोग it will take a little bit of time. Just give me a second. सॉरी अबाउट दैट. तो थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा इसको करने में, बट वंस वी आर कंप्लीटेड विद दिस एक्सरसाइज हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो जस्ट अलाउ मी सम टाइम एंड वी विल कंप्लीट दिस. फर्स्ट ऑप्शन आंसर इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. मुझे इस डिपार्टमेंट में एक रोल चाहिए. अभी हम सेकेंड जो चीज करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हमारा प्रिफर्ड जॉब टाइटल. सो मे बी आई एम जस्ट मेकिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. अभी मैंने इसको कुछ सोचा नहीं था, हमने चैट जीपीटी को ही पहली बार पूछा है अभी. So I will write communications manager. Preferred salary range मैं बोल सकती हूँ इसको 15 LPA. Preferred city, I am in Mumbai right now, so maybe Mumbai. Just write Mumbai. Whether you want remote, hybrid, or on-site roles, I think hybrid should be fine, so I get to enjoy both the worlds. तो इन्होंने ये भी पूछा हमसे. अभी क्वेश्चन 1 इज डन. सो वंस वी गिव, एंड दिस इज द ग्रेट पार्ट, अगर वो सारी चीजें हमसे एक बार पूछेंगे, हम सब आंसर एक साथ कर देंगे, वी माइट गेट कंफ्यूज्ड. सो वंस वी आंसर ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, देन इट विल गो अहेड एंड आस्क मी द सेकंड क्वेश्चन. सो लेट्स जस्ट रिप्लाई. Okay, perfect. Based on your profile and target, your positioning should be corporate communications plus brand storytelling plus AI-enabled communication strategy. And this should be my niche. Now, question number second is what kind of companies are you targeting? I think without a doubt, I'll just go for this one. Maybe MNCs. And also tell me what industries you do not want. I do not want a small scale company. Do not want a small scale company. ठीक है. That's a good filter since you're targeting this. Your Naukri profile should emphasize on stakeholder communication, executive communication, brand narrative, strategic messaging, and all of these parts. And इन्होंने मुझे 2 keywords भी दिए हैं. So you should position yourself as corporate communications plus strategic brand messaging rather than a digital marketer or content creator. अभी आप मुझे बताइए कि ये जो हमारे टर्म्स है, डिजिटल मार्केटर एंड कंटेंट क्रिएटर, दीज आर ब्रॉड लेवल टर्म्स, राइट? और इनसे वो चीज क्लियर नहीं होती है दैट इन व्हाट फील्ड आई रियली वांट टू वर्क इन, विच इज बेसिकली दिस. तो we just did 2 exercises. One was to understand what department we are focusing on, what kind of role we are focusing on, and the second question was what kind of company I'm focusing on. So ये 2 चीजें हमने बताई, and then it gave me 2 very important keywords जो शायद मैं खुद से figure out करती तो थोड़ा time लग जाता. So this gave me these 2 proper keywords which I will use. Now I'm coming back to you just to understand कि आपको समझ में आ रहा है, इजी है. Okay. Prompt I have already shared. Just go in the chat section and you will see the prompt. Yes, perfect. Very clear. Great. Thank you. It is doable, yes. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बस थोड़ा सा चैट जीपीटी से फ्रेंडशिप करनी है और हो जाएगा. So which of these responsibilities do you most enjoy and what recruiters to notice first?
What I mostly enjoy is leadership communications. So I will take that. एंड इट टोल्ड मी टू टेक 3 to 5 ताकि हम रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करें। और हर टाइप के रोल में हर टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, सो इधर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़े से फिल्टर डाउन हो जाएंगे। आई ऑल्सो एंजॉय स्टोरी टेलिंग एंड स्ट्रैटेजी अ लॉट, सो आई विल राइट दैट एज वेल। So let me just quickly write brand storytelling and content strategy. AI-enabled workflows, yes, this is the future, and I really enjoy this. So I will include that as well. And I will write LinkedIn personal branding as well. So let's see. So your strongest positioning theme is now becoming AI-enabled corporate communications and strategic brand building. And your differentiator is not just communications, but communications plus AI adoption plus executive storytelling plus brand personal branding. And now that is the kind of communication that is highly valuable for techs and MNCs and for enterprise brands and all of that. तो वो मुझे clear हो गया. With every reply, ChatGPT is also giving me its views, so which is a great part. Now, what are your strongest measurable achievements? So here I can maybe write engagement improvement, like I helped in some kind of engagement improvement. So I'll do that. Communication impact, of course. Since I'm someone who is targeting in communication, तो उससे impact पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I'm someone who is very vocal about AI, so it has also helped in AI implementation. And I think that is it. So let's do that. अभी जब हम अपने रिज्यूमे बनाते हैं तो अभी हम नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नौकरी, अ लॉट ऑफ डिफरेंट things come into picture. So even when you write your resume has smart smart responsibilities attached to it. आप कभी भी जब अपने रोल्स के बारे में लिखते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, यू डेफिनेटली हैव टू मेंशन योर इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट रेट, हाउ मच इट हैज इम्प्रूव्ड, व्हाट ऑल इम्पैक्ट यू हैव मेड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नॉट जस्ट ब्लैंकली से कि मेरी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसके पीछे कुछ मेट्रिक तो होगा कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ। अगर कुछ भी आपने ट्रेनिंग की तो कितने लोगों को ट्रेन किया। सो दैट इज व्हाई इट इज आस्किंग मी टू स्पेसिफिकली टेल हाउ मच इम्प्रूवमेंट हैज बीन डन एंड नॉट जस्ट ब्लफ अराउंड इट, ताकि वो थोड़ा लेजिट भी लगे एंड इट इज एबल टू गिव मी प्रॉपर results. So if I take these 3 points, I will say improved rate by 35%, and let's be realistic. हम ऐसा कुछ भी बोलने के लिए ऐसे 100% भी नहीं बोल सकते हैं। reduced turnaround time by maybe 25%, and conducted 60 workshops in 24 months, which is 2 years basically. Perfect. These numbers are strong enough to make your profile look impact driven instead of task driven. तो वो एक चीज क्लियर हो गई। एंड द फाइनल क्वेश्चन हियर इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू एब्सोल्युटली नॉट वांट एनी मोर। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर कई बार ऐसा होता है हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बट व्हाट वी रियली वांट टू अवॉइड इज समथिंग दैट दिस क्वेश्चन विल आंसर। सो रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन वर्क, जो मोनोटोनस काम होता है वो ऑफ कोर्स कोई करना नहीं चाहता है। सो आई विल जस्ट मेंशन दैट आई डो नॉट वांट टू डू एनी repetitive execution work. Night shifts, a big no for me. It will just mess up with my entire schedule. And I do not want a burnout culture. So I will just mention that. ठीक है। So you want these things, you do not want these things, वो सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। Now कैन यू अंडरस्टैंड जो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है। सो दिस इज द परफेक्ट हेडलाइन दैट आई कैन यूज फॉर माई सेल्फ। योर आइडियल प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज कम्युनिकेशंस मैनेजर, कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग, लीडरशिप कम्युनिकेशंस, AI enabled communication strategy, and your strongest market differentiators are this. So you do have, like, how do you
differentiate yourself or how are you unique to others, ये यहाँ पर clear हो रहा है. So you have a rare combination of corporate communication and understanding, brand storytelling, LinkedIn personal brand expertise, workshop facilitation, and all of these things. So इसने पूरी तरीके से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है जो हमारा गोल था. And now we have come up with a perfect headline. So now I'm coming back to you. And mm, yes, Janvi, yes, by the end of this session, I will share the PPT with you. Don't worry. There's nothing to hide. आपके सामने मैंने उसको AI से ही बनाया है. It's just the prompts that make all the difference. कि हम prompts कैसे पूछते हैं, हम instructions कैसे देते हैं AI को to get the result. Yes, I will share it with you. How would it measure what we are just adding as measurable achievements? So basically, we add numbers and metrics while giving these details. Do we get these as options? Yes. So, for example, if my role is of a campaign manager, just for an example, I have worked on few campaigns. Those campaigns have been efficient 50%, 60%. तो वो सब मेट्रिक मुझे मिल जाता है. इफ यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटियर, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स यू हैव मेड और व्हाट काइंड ऑफ सक्सेसेस यू हैव ऑब्जर्व्ड. तो वो सब चीजों को आप इधर मेंशन कर सकते हो. द मोर यू मेंशन योर अचीवमेंट्स एज नंबर्स एंड एट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट आप सबको पता है, स्मार्ट फ्रेमवर्क इज specific, measurable, accurate, relevant, and T is time bound, so timely. So ये जो फ्रेमवर्क है, लेट्स स्टिक टू दिस एंड इस हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाएंगे तो वही नंबर्स आपको यहाँ पर भी डालने हैं, हाउ यू आर एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट. एंड वंस यू पुट दोज नंबर्स ऑनेस्टली, even if it is a low number, it is fine. It will be able to optimize your profile. AI link में PPT. I didn't get you, Omveer. What about freshers, ma'am? How should we work with metrics then? It is fine. It totally depends. आपने अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखा होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैंने अपना प्रोफाइल शेयर किया है. एंड व्हेन आई शेयर्ड माय प्रोफाइल, इट मेड इट वेरी क्लियर दैट इट इज a profile of an experienced person. If you are a fresher, your profile will say that, and accordingly, you will see all the results. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रेशर होंगे तो आपको मैट्रिक्स ऐसे मेकअप मेड अप करके बनाना है. दैट्स नॉट नेसेसरी. इफ यू आर अ फ्रेशर, योर प्रोफाइल विल से दैट यू आर अ फ्रेशर. बट जो हमने अभी एक्सरसाइज किया, ये 5 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज, एंड देन वी आंसर्ड द एआई प्लेटफॉर्म, we got the headline at the end of it. Is that part clear? And if it is clear, then I'll go ahead with the next question, like next part of the presentation. Yes, clear so far. Perfect. Yes. Okay. Great. So we understood why Naukri is important. We understood what all are the metrics that is going on in the world right now, like how people are actually analyzing the profiles. We also understood कि हम AI prompt, एक छोटा सा prompt और एक AI tool की मदद से अपने headline तक कैसे पहुंच सकते हैं. If we have no career transitioning and an experience in one field and freshers for others, how will that work? Okay. ठीक है. So you are kind of trying to say that you are someone who wants to make a career transition and do not have experience in that field but hold experience in some other field. You again have to share your use case. So there are a lot of people who do career transitions, who make transitions in their career, but then they have of course zero knowledge in that case. But अगर चूज किया ही है कि मुझे उस करियर की तरफ जाना है, so you must be working towards it. You must be maybe taking some courses around it, developing your skills around it. तो वो सब चीजें आप mention कर सकते हैं, which will give you a lot of weightage, saying even if this person does not hold practical experience and is looking for a practical experience, this person has some kind of skills to support that career. So try and work towards developing the skills, try and work towards getting certifications, and then move towards it. Is it clear, Janvi? I hope I'm able to give like a yes, definitely. Definitely. Feel free to do that. But for now, is it clear, right? Perfect.
So I will again close the chat section and let me go back to my PPT. Okay. So I'm sharing my PPT right now. We did this prompt. We are done with this prompt. And now let's see. हमने headline already ChatGPT से ले लिया है. So I think this should be more and more clear now. एंड दिस इज द रीजन कि मैंने पूरा एक्सरसाइज आपके साथ किया सो दैट ये वाला जब समझाना होगा आपको फॉर्मूला या फिर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सो दैट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस नाउ the formula here is to write the headline and this is the very first thing that recruiters will read and will see and we already have the metrics where recruiters just maximum like spend 6 seconds on a profile so very less time to impress them but we will do that. The formula is your role plus industry domain plus top skills और specialization. ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. आपका रोल क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है और टॉप स्किल जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं. A very weak headline in this case is experienced professional looking for jobs. इस टाइप के 1200 सर्च रिजल्ट्स दिखाई देने की संभावना है अगेन that's written in your like on your screen. So 1200 search results might show on this because इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है आप कौन से रोल में हो आप कौन से इंडस्ट्री में हैं आपके स्किल क्या है. It's just that कि you're there and you're looking for a job which is definitely not a wise decision. Senior Digital Marketing Manager, SEO and Performance, FMCG and e-commerce. पहला जो हो गया आपका डेजिग्नेशन दिख रहा है बहुत ही क्लियर तो समझ में आ रहा है. सेकेंड इज योर बेसिकली योर डिपार्टमेंट एंड थर्ड is your industry, which is making it very, very like clear. So appears in targeted searches, recruiters know exactly your value. So this is very clear. Now, a very weak headline again is MBA graduate fresher. So a lot of people who were asking me freshers है तो क्या करें? Do not write this. कि मैं बस एक MBA ग्रेजुएट हूँ और एक फ्रेशर हूँ. वेरी वेरी जेनरिक हेडलाइन. Instead, you can write something like MBA in finance, FPN, FP&A and financial modeling. This might be your specialization. And then seeking analyst role. क्या टाइप के रोल आप देख रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हैं. Which is again a very good headline for freshers because you do not have any experience to showcase at this point, but you can at least write these kind of strong headlines. 1 second. ठीक है तो अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया वीक और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट का हेडलाइन का. तो वीक जो हो गया एक्सपीरियंस के लिए वो ये है. स्ट्रॉन्ग वन इज दिस. वीक फॉर फ्रेशर्स इज हियर एंड स्ट्रॉन्ग वन इज दिस वन. अगेन वी कैन गो बैक एंड बिल्ड ऑन विद आवर कम्युनिकेशन. सो हमने जो भी कॉन्वर्जेशन किया है चैट जीपीटी से हम उस पर ही आगे बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पर. तो आई अगेन टेक दिस प्रॉम्प्ट वेयर इट सेज राइट 3 नौकरी हेडलाइन वेरिएशंस फॉर मी. अभी हमारे पास एक है. My role is this, industry is this, my skill sets are these, and make each under 12 words. So let's do that. मैं बाद वाला पार्ट शायद स्किप करूंगी बिकॉज मेरे इंडस्ट्री के बारे में तो पता चल ही गया है अभी तक चैट जीपीटी को. And I'll give this prompt to you also, just in case you are also someone who is doing it along with me. So I'll go to chat GPT, I'll share the screen, I will write this prompt. There is some problem here again. 1 second. Command C. One second. This is the problem sometimes which I face, but it should be fine. Let's see. No, I do not want to do a voice research. Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Let's figure out what. 1 second. Yeah, let's do that again. Send.
So I asked it the same prompt and it gave me few options. और जैसे मेरा इंस्ट्रक्शन था कि इसको हमें 12 वर्ड्स के अंदर में रखना है, कीवर्ड रिच रखना है, कोई बज़वर्ड्स को यूज नहीं करना है, and that's why it gave me few options. Now let's go back again and let's see. So हमने ये यूज किया and with this we will get to see a lot of headline options and we can choose whichever we want to. The basic info here is the field that trip everyone up. So here the current CTC part. Again, always fill this even if it is approximate. Recruiters filter by salary, leaving it blank is equals to invisible for many searches. So कई बार ऐसा होता है we are confused, especially when we are freshers. We do not know how much we should ask for. If we are asking for more, if we are asking for less, what should we do? बहुत सारे confusions होते हैं. But there are so many apps and there are so many websites which will tell you कि आपके रोल के लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए किस टाइप का, मतलब कितना स्टाइपेंड या फिर कितना सीटीसी होगा जो मार्केट के हिसाब से अभी सही रहेगा. डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, आस्क एआई इफ पॉसिबल, एंड देन राइट सम अमाउंट ऑफ सीटीसी. बिकॉज हमने शुरुआत में ही देखा कि वेन एवर रिक्रूटर्स आर लॉगिंग इन टू द प्लेटफॉर्म दे आर डूइंग सर्च विद फिल्टर्स, दे आर अप्लाइंग द फिल्टर्स and then they are getting the result. If at all they have put a filter called 6 LPA, for example, for this role, and your role, your profile is something which is mostly suited, but आपने salary नहीं डाला है उधर, your profile will not be visible because आपने उधर अपना वो figure ही नहीं डाला हुआ है. So that is the reason कि ये सारे जो points हैं, these might sound confusing. This might feel like you're not able to understand कि आपको कितना अभी उधर लिखना चाहिए, but still fill these because इसके basis पे filtering होता है. Second is expected CTC. Again, current हुआ. If you are um, if you're just like into the system right now, do not put and like zero, do maybe NA, or for example just put a very minimal amount like a 1 LPA kind of a thing, ताकि वो at least उस search result में तो आ जाएगा. Expected CTC, again 15 to 25% above your current CTC, that's something which is market worth. और बहुत ज्यादा भी high नहीं होगा कि इतना high mention कर दिया कि आप वो search में ही नहीं आ रहे हो. So do not leave it blank. Again, do bit of market research and fill that field again. Notice period, be very accurate. Entering zero when it is 30 days, just because you feel like कि 30 days डालूंगा तो ज्यादा टाइम दिखाई देगा तो इसके लिए मुझे शायद कॉल नहीं आएगा, मैं जीरो डाल देते हैं. ऐसा मत करिएगा. जो भी आपका एक्चुअल नोटिस पीरियड है वो उधर मेंशन करिए. एंड like definitely fill that field again. Do not make it like blank. Immediate gets more called, but do not lie. So this is a common misconception which a lot of people follow. They just put zeros to get maximum calls at that time, but do not do that. You will break that trust, which is definitely not advisable, and that too in the very first step itself. Current location, always match to the city that you are physically in. Recruiters filter by city for most non-remote roles. So just because you want to move to a tier 1 city, if you are in a tier 2 city, just saying, do not put in any city for that matter. आप जिस city में अभी physically based हैं उस city का ही नाम लिखिए. And preferred locations में आप फिर उन city का नाम लिख सकते हो जिसमें आप move करना चाहते हो. So list 3 to 5 cities that you are genuinely open to move to, and more options is more search hits. So that's there. Job type, mark both full-time and part-time if you are flexible, and more reach again. So if there are some part-time roles also in which you are fitting in and you are generally interested, pick both of them so that आपकी reach बढ़ेगी और आपको opportunities मिलेंगे. Common mistake is only ticking one. It's fine. If you're not looking for a part-time role and you only need a full-time role, just put one. But just saying, it is fine to put both also if you are aggressively searching for a job change. Now, the skills are the engine of Naukri search algorithm, and this should define how important skills are. So this is where I think I'll just take a 1 minute break. I'll take a water break quickly, and I will request you all to do the same. So please drink water, and I'll be back in a minute. Till then, I'm opening the chat section. So if you have any doubts, any queries, please feel free to ask me those queries. Chat section is open. So shoot your questions. I'll be back in a minute.
As I mentioned earlier, I will share the PPT. Do not worry about that. I will share the PPT by the end of the session. Um, a lot of you are sharing your LinkedIn profiles also. See, it's practically not possible for me to go through all the profiles. तो हमारा एक लिंक्डइन मास्टर क्लास भी होता है जिसमें हम लिंक्डइन के बारे में स्क्रैच से एंड तक सब कुछ समझते हैं, फ्रॉम हाउ टू अपडेट योर बैनर इमेज टू योर प्रोफाइल इमेज टू योर हेडलाइन, इतना बेसिक्स में जाके हम सब कुछ समझते हैं. सो इफ यू रियली वांट a session on LinkedIn masterclass or something around that, please feel free to write for the team and they will arrange the same for you. Do not worry. Um, okay, I do not have any experience in this field, but I really want to come in this field. I have actually answered this question. So if you are someone who is kind of transitioning and you want to transition into a different career, start building your skills, your certifications, and all of that towards that career. आपके पास अभी एक्सपीरियंस तो नहीं होगा शो करने के लिए, बट एटलीस्ट यू विल हैव सम काइंड ऑफ you know proof to show that you are really interested in that field and you're also working towards that field. So start doing that. There is I'm an accountant, and now from last year, I'm doing report preparation like MIS reporting. Then, what will be my profile? Feel free to ask this to ChatGPT again. और MIS manager लिख सकते हैं, MIS accountant लिख सकते हैं, but I do not have a lot of knowledge about this field, so I will definitely tell you to ask your mentor, to ask the platform, ask AI also what kind of roles you can look for. सो मैम Naukri.com पे अनवांटेड कॉल्स और इनवाइट को कैसे कम करें? कॉल रिसीव कर रहा हूँ जो मैंने कोई स्किल मेंशन भी नहीं किया है. नितिन, आई कैन नॉट डू अ लॉट अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली. हमारे डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, एंड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स सेल आर डेटा which we basically cannot ignore. You just have to be very very mindful about it. और बहुत सारे रिक्रूटर्स पहला जो होता है ना, वो पहले आपको ईमेल के थ्रू या Naukri.com पे भी आप रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशन भेज सकते हो, उसके थ्रू पहले कांटेक्ट करते हैं, एंड दे डू नॉट रियली सेंड यू और कॉल यू डायरेक्टली लाइक दिस. सो बी वेरी अवेयर ऑफ द स्पैम्स. Be very very aware about that, but there is not really a way where you can ignore the spam calls, so just be aware. अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो इमिडिएटली ज्वाइन डाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन. मैंने बस वहां पर ये मेंशन किया था कि आप अगर 30 days है तो फेक करने के लिए जीरो मत डालिएगा, बट इफ यू आर रियली इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन, प्लीज फील फ्री टू पुट जीरो days there and immediately available to join. I'm an accountant, and now from last year, I'm doing MI that is done. I have diploma mechatronics engineering. Can I come to IT field? Of course. There is no such thing as not able to transition. You are definitely able to transition in any role. A person who has done engineering can now be a content creator. You never know. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप transition नहीं कर सकते हो. You just have to work towards it. और थोड़ा अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा काम करना होता है. दैट इज इट. फेक जॉब्स को पहचानने का कोई तरीका? सो इफ देर इज अ कंपनी विच इज रीचिंग आउट टू यू फॉर अ रोल, सर्च अबाउट दैट कंपनी, गूगल दैट कंपनी, फाइंड दैट कंपनी ऑन लिंक्डइन, उस कंपनी के वेबसाइट पर जाइए. उस टाइप का रोल अगर दिखता है, अच्छी बात है. वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड इफ दैट कंपनी इज रियल और फेक. सो जस्ट डू दैट. I have applied many times for jobs, but not any response for recruiters. ठीक है, this mostly happens. So what I do is I have a 3-step process. Majorly मैंने नौकरी के थ्रू अगर किसी प्रोफाइल को देखा है, so I go on that profile, I search for that role, and I apply to that role. That is there, and that is done on Naukri. You will be able to find that same company on LinkedIn. If that company is legit, again, definitely you will be able to find that on LinkedIn. If you go to LinkedIn, you will find that role. You will find a hiring manager who is promoting that role. So you can ping the hiring manager saying you came across this kind of role, you're really interested, you want to be like
you want to apply for the role, you text that person, you apply via LinkedIn. You also search that company, you go there to their website, you see a career section that is there on their website, and that's it, you apply there also. So you have three touch points. You have Naukri, you have LinkedIn, and you have the website. On LinkedIn, you actually have a hiring manager also. So you ping that person. This is the fourth part. So अगर किसी रोल के बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब घुस चुके हैं और आपको वो रोल चाहिए ही चाहिए, सो देयर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स, जस्ट ट्राई टू प्रेस ऑन ईच टच पॉइंट एंड गेट सम रिजल्ट आउट ऑफ इट. रिकॉर्डिंग डेफिनेटली यस मिल जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट. Mandal, it is very, very important to follow up with that recruiter also. So a lot of times in the pool of candidates, it is kind of obvious कि कई बार भूल भी जाते हैं या फिर शायद टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में उनको समझ में नहीं आता है. इफ यू वांट क्लैरिटी, reach out to that recruiter again. If they do not reply to you, understand that they are not interested in the profile anymore. So take it as a hard truth, but yeah, just go on then. फेक मेल बहुत आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा सही है. Cannot do much about it again, so that's the reality, and just we just have to live with it and be extra precautious. That is it. Okay, 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 so I will come back to you all again, but we also need to cover few points. तो मैं अब वापस से पीपीटी पर आती हूँ. I'll stick to the PPT for some time, and let's cover the topics, and then again I will come back to you all. So I am disabling the chat section. Attendees can chat with no one right now, and let's just go on to the PPT. So skills वाला part जो बहुत ज़्यादा important है. 1 second. ठीक है. So the engine of Naukri's search algorithm is the skills part. How अभी सॉ कि हम कितना अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, हम कितना नोटिस पीरियड डालते हैं, कितना करंट सीटीसी एक्सपेक्टेड सीटीसी डालते हैं. ऑल ऑफ दैट मैटर्स बिकॉज वो सब का सब जो है हमारे फिल्टर्स में सर्च हो जाता है. सिमिलरली स्किल्स, सो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में और आपके स्किल्स सेक्शन में, ये सब में आपके स्किल्स मेंशन होते हैं. देर आर few major skills जो mentioned हैं उस रोल के लिए, which are extremely mandatory for those roles. उन skills के लिए वो filter भी apply करेंगे, just so that they only get to see profiles who have those kind of skills. That is why I say skills are the guiding light of that role. So when a recruiter is searching for maybe Python developer, Mumbai 3 years, like this is the line, Naukri will match your profile against those skills and not your job description text. So that is why even though that kind of skill is mentioned in the job description, आपके skills में mention होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. These are few of the skills, जैसे Python हो गया, SQL, data analysis, Power BI, React, SEO, digital marketing, Java. These are the skills. These are like few important terms जो आपको पता ही है. So the very first point again is maximum you need to add 10 to 15 skills. मोर इजंट ऑलवेज बेटर. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा डाल देंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा आएगा. नौकरी विल मैच अगेंस्ट योर स्किल टैग्स, नॉट योर जॉब डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट. सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन स्किल्स. और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, if I'm working on social media, if I say I'm a social media expert, I do not again have to mention कि मुझे कैप्शन भी आता है, मुझे प्रोफाइल रिसर्च करना भी आता है, मुझे कीवर्ड्स भी आते हैं, मुझे हैशटैग्स भी आते हैं. If I'm saying I'm a social media expert, it is given that I will know all of these things also. So if you feel you have 25 skills to mention, try to bring most of your skills under one umbrella, सो दैट यू मेंशन दिस वन टर्म और 3-4 स्किल्स तो इसमें ही कवर हो जाते हैं. सो बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, एंड अगेन यू विल टेक AI's हेल्प ऑल्सो, हाउ टू बेटर अलाइन योर स्किल्स. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. यूज नौकरीज ऑटो सजेस्ट, ऑलवेज पिक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंड दीज आर द एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग्स वेयर रिक्रूटर्स आर ऑल्सो फिल्टरिंग. सो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्किल में लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रेजेंस, फॉर एग्जाम्पल, but the better known term here is digital marketing. So
उस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप डाउन के बाद भी अदर का ऑप्शन होता है, ऐड करने का ऑप्शन होता है, बट स्टिल select from that drop down menu only, because that is the filter that the recruiter will apply. So please only like select from that drop down, closest जो आपका possible skill है या फिर closest match है, आप वो apply करोगे तो best है। मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स, गॉन आर दोज डेज जब सिर्फ हार्ड स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। अभी के जमाने में सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी बहुत ज्यादा वेटेज है। सो 60-40 इज द वेटेज विच यू कैन लाइक क्लियरली सी। सो प्लीज try to make it a mix of both kind of skills. Prioritize your current skills, your most recent and relevant skills, सबसे ऊपर वो आने चाहिए। देन मे बी लाइक योर लेसर नोन स्किल्स कैन कम डाउन। सो दिस इज द थिंग। एंड अगेन मैं फिर से बार बार एआई प्रॉम्प्ट को यूज नहीं करूंगी, बट हियर इज अगेन वन ऑफ द प्रॉम्प्ट्स वेर आई एम एनरोल दिस फॉर दीज मेनी ईयर्स एंड दिस काइंड ऑफ लाइक डोमेन वर्क दैट आई हैव डन। Give me top 15 skills that I can use on Naukri and something like that. So just apply these kind of prompts on AI. Once I give you the PPT, you can apply that. Uploading the right resume. So doing this PDF format only, word files can render incorrectly, हमें सिर्फ PDF में देना होता है, बिकॉज PDF में आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वर्ड में ऊपर नीचे होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB। these are the best practices that you need to follow. File name, first name, last name, role, this is the best format that you can follow. Re-upload after every 2 to 3 weeks to stay fresh in search. जब मैंने वो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा था, अ लॉट ऑफ यू, आई थिंक 80% ऑफ यू सेड कि आपने कंसिस्टेंटली वो आप उसको अप्लाई नहीं करते हो या फिर आप उसको रिफ्रेश नहीं करते हो अपने प्रोफाइल को, विच इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। सो प्लीज डू try to stay fresh and apply it in 2 to 3 weeks. Keep the same resume on Naukri as you send to recruiters. कुछ और भेज रहे हैं रिक्रूटर्स को, नौकरी पर कुछ और है, लिंक्डइन पर कुछ और ही आपका रिज्यूमे है, डजंट मेक सेंस। कीप वन रिज्यूमे एवरीवेयर एंड देन 1 पेज फॉर 0 to 5 years एंड 2 pages फॉर 6+ years। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार बोलते हैं कि 1 पेजर ही रखिए, विच इज गुड इफ यू आर अ फ्रेशर और अर्ली इन योर करियर, बट इफ यू हैव मोर एक्सपीरियंस टू शेयर, पुट यू कैन यूज 2 pages ऑल्सो। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हमने ये करना है एंड अवॉइड वाला पार्ट तो इसका ऑफ कोर्स कंप्लीट ऑपोजिट पार्ट हो जाएगा। एंड देन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई हैव ऑल्सो एडेड अ AI prompt also. Now writing your work experience that gets callback. So this is the formula where what was the situation, you put some context, action, what you did and the result. So again जो हमने स्मार्ट फ्रेमवर्क पे बात करा कि जस्ट mentioning that you grew or you executed or you helped, you updated doesn't make any sense. You really have to make it smart. Just give me a second. Yes. So you have to make it very, very smart. And that is why अगर grew Instagram आप लिख रहे हो यहाँ पर, so what was the following before, what's the following now, how much it has increased. Then again, a proper example of sales. So if you're mentioning something about sales, what is the proper criteria or number that you have focused on, or kitne time mein hua. So make it very, very smart. Here are like few examples. Now, यहाँ पर हमने बात किया था employment gaps or education के बारे में. A lot of people also asked about what to mention if they're doing a career transition. I think this is one of the most important slides for you guys, so please pay attention. Addressing employment gap. So if the gap is under 3 months, 3 महीने का गैप अगर हो रहा है, मेंशन करने की जरूरत नहीं हो रही है, it's fine. Don't mention it. Recruiters won't ask if dates are listed correctly. And इस गैप को फिल करने के लिए आप डेट्स को फेक मत करिएगा, बिकॉज दे विल someday or the other ask for a relieving letter और एन एक्सपीरियंस लेटर। उस लेटर में आपका टेन्योर लिखा होगा, डेट लिखा होगा, फिर आपको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ यू फेक इट। सो प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। गैप अंडर 3 months, इट्स फाइन नॉट टू मेंशन, जस्ट द डेट्स जब आप लिख रहे हो वहां पे वो आप करेक्टली लिखिएगा।
If gap is a bigger gap, so you can mention maybe add a brief above or below the gap saying career break for family care or health or upskilling. Just mention that properly. Gap over 1 year, create a separate entry titled saying career break. 1 साल के ऊपर गया तो career break लिखिए. And the thing I mentioned in the very beginning, करियर ट्रांजिशन भी कर रहे हैं या फिर ब्रेक भी कर रहे हैं, उस टाइम को जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे आपने अपने ऊपर काम किया, यू नीड टू मेंशन द सर्टिफिकेट्स, द फ्रीलांसिंग वर्क, द वॉलंटियर वर्क और द कोर्सेज यू डिड ड्यूरिंग दैट टाइम. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट मेंशनिंग दैट. एंड नेवर एवर लाई अबाउट डेट्स, बिकॉज जब भी वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आएगा, जब भी वो बैकग्राउंड चेक्स होंगे, it will get into light and that will be a very hard thing to cover. So please do that. Okay. Now the education section is a very big quick win section for you guys. So add percentage and CGPA because recruiters also filter by that. And this is mostly applicable in the early career section. Relevant coursework and projects for freshers. If you do not have any work experience to show, these kind of coursework or projects you have worked on or internships you have worked on is a big add-on to mention. And add all the certifications, whether it be Coursera, LinkedIn Learning, आपने स्किल कोर्स से भी कुछ सर्टिफिकेशंस करे होंगे, NPTEL, तो ये सब चीजें आप उधर मेंशन करिए, just to justify again you're working towards it, you are bettering your experience and all of that. And if you need again some help with how to do this, I have again added an AI prompt for you, so you will be able to see that. Now, visibility and activity are the hidden layers. So जो हमने वहाँ पे आई थिंक शुरुआत वाले स्लाइड में हमने जो बात करी थी अबाउट प्रिवेसी सेटिंग्स एंड व्हाट ऑल सेटिंग्स यू शुड रियली अप्लाई, सो ये वाले जो पॉइंट्स है दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. रेज्यूमे विजिबिलिटी की अगर बात करें तो उसको हमेशा हमें पब्लिक रखना है. दैट्स द एंटायर एजेंडा बिहाइंड क्रिएटिंग अ नौकरी प्रोफाइल, राइट? So make it public, set it to public. A private profile is invisible to recruiter search. अगर आप स्पैम्स अवॉइड करना चाहते हो, अगर आप आई थिंक फेक कॉल्स अवॉइड करना चाहते हैं, यू कैन फॉर सम टाइम ऑल्सो हाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, like in case phone number, but your resume in total has to be publicly visible. Just in case you do not want to be contacted on a mobile phone, at least your email address will be mentioned over there. So please do that, and always set your profile as public, because that's how recruiters will be able to reach you. The refresh trick is pro tip. Again, re-upload your resume in every bi-weekly basis or a monthly basis max, because the moment you update your resume, your profile again refreshes और वो search result में ऊपर आने लगेगा. Job alerts is set 3 to 5 alerts. So create narrowly defined alerts where these are not very broad. तो जैसे एग्जाम्पल हो गया डेटा एनालिस्ट बैंगलोर 2 to 4 years एंड ऑल्सो योर CTC. सो ये टाइप का प्रॉम्प्ट डाल के उधर अलर्ट सेट कर सकते हैं. Profile privacy, again, it has to be balanced. So you can block current employer from seeing your profile, enabled under setting and privacy. Setting में आपको ये मिल जाता है जहाँ पे आपका करंट एम्प्लॉयर, करंट बॉस आपका ये प्रोफाइल नहीं देख पाएगा, बिकॉज दे विल नो दैट यू आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब चेंज, बट others who are interested, they will be able to see your profile. So please do that. And then we have a score meter also. So 70% प्लस टारगेट करना है उस स्कोर को हमें अचीव करने के लिए. एंड नौकरी अगेन हैज एन AI टूल ऑफ इट सेल्फ. सो नौकरीज AI पार्सर टूल will parse your profile, will go through your profile, and a clean, very formatted resume will definitely have a high parse accuracy, plus better matching when it comes to filtering, and when it comes to coming in the filter search. तो ये अपने वो hidden levers हैं जो आप अगर अनेबल करते हो, और जो भी आपको डिसेबल करना है अगर डिसेबल करते हैं, तो आपकी रीच बेटर हो जाती है. नाउ
Because again, this is this era of AI and it can help you do a lot of different things. I have created a cheat sheet for Naukri, which is your AI prompt cheat sheet. So if you want to write your headline, your summary, your skills, your job description, your gap explanation, your keyword audit, for all these 6 criteria, I do have like a very small prompt which will be able to help you. And if whatever we have spoken about, हमने जो भी अभी तक knowledge लिया है, उसका अगर एक्शन प्लान बनाए, आई विल नेवर वांट यू टू सिट इन वन गो एंड डू ऑल ऑफ इट टुगेदर। वो करने जाएंगे तो यू विल जस्ट मेस अप विद योर ब्रेन एंड वो काम भी नहीं करेगा। आई वुड वांट यू टू डू दिस इन अ 5 एक्शन प्लान कोर्स ओवर अ वीक। टेक 5 days, इट इज फाइन। आपने ऑफ कोर्स इतना सारा टाइम आपने ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है, नो मैटर इफ यू टेक जस्ट 5 days, like even better, and just make these sections perfect. So your first step will always be to rewrite your headline today. Um, basis whatever we learned, basis those 5 questions we asked ChatGPT and we got the answer, basis the kind of roles you really need. So sit with yourself, do a rough sketch first, then come to your laptop and work around it. The second thing is refresh your top skills, because skills का section मैंने जितना important बताया as a guiding factor, over a time it just becomes very बोरिंग एंड वेरी गिवन ऑल्सो लाइक अ स्टोर रूम केप्ट ओवर देयर, कि आप स्किल्स को आप अपडेट करते जाते हो बट स्टिल बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो आउटडेट हो चुके हैं, जिस पर वो काम नहीं करना है फिर भी वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। डोंट डू दैट। सो ऑलवेज कीप रिफ्रेशिंग योर स्किल्स। अपलोड योर fresh PDF resume, like your first, again, your freshest draft, so your profile gets a revamp. Set your profile to public, do not keep it to private, and 3 targeted job results, which will give you the kind of results you want. So do that. And once you do all of this, not right now, but once you are doing all of this, you are again in the top 10% of Naukri users. And most people set up a Naukri profile once and never touch it again, which a lot of times happen. Do not be one of those people. The ones who get calls are the ones who treat it as a living document. So always and always keep it refreshed, keep it alive, and I think that should do the job. So I'm stopping my screen share right now, and I'm opening the chat section right now. And I'm not forgetting, as I promised, I'll show you my profile also, how I have optimized it. So you will be able to see it properly. And if you have any queries later, we can have another session where we can only and only focus on just the queries. Okay, I can see a lot of you are already started putting your questions. So for job role, I mostly call from recruiter agency and my experience was not good with them. There is any option on Naukri to hide my profile from them? Means I want to show my profile only with companies. Yes, of course. So as I mentioned, settings में privacy होता है where you can hide your profile from agencies, from your current recruiters, and please do that because ज़रूरी है. Should we remove some older skills while refreshing the skill set? Yes. No one will know better than yourself, like what all skills are, the recent ones or the most important ones and all of that. So please, 110% remove the old skills. 10 to 15 to मैंने maximum बोला, even if you just put 5 skills which are the most important skills in your case, it is fine. Just ensure that those skills are the most important skills and the most recent skills. Quality matters here, not the quantity, so do not worry about that. What is the advantage of Naukri Pro? Better insights, better results, better visibility. It is okay, but I would say if you're just starting out, if you want to do all of these steps, start with a Naukri profile. If you do not see the kind of result you are expecting, then move on to Naukri Pro. But शुरुआत करने के लिए the basic Naukri profile should be more than enough. Resume optimization tool and PPT link. Resume optimization, I use the free version of ChatGPT, which is readily available to all of you. I will share the PPT. Don't we need to keep the old skill sets but give preference? You can keep the old skill sets. It is completely okay. But remember,
when it will be coming for the exact match, your skill, your profile might not be in the top profiles, because the kind of role you are searching for, right? Maybe I began as someone who was doing data entry, and I was a data analyst at that time, data entry and data analysis. I am 7 years into my career and I am into a managerial role right now. I do not want to put in those kind of skills into my resume or my profile at this moment. It is completely okay for me to get rid of those things. If I'm an expert in data analysis right now, it will come in some or the other skills. So you do not specifically have to mention all those old skills that you used to mention. You just have to revamp it and give it a fresher look, which you can absolutely do. Okay. Recordings will be available. Don't worry about it. Just reach out to the support team and they will be able to help you. जेडी देखकर अपने स्किल्स अपडेट करने चाहिए रेज्यूमे में 110%. 110%, yes. Um, भूपेंद्र जी, इट इज फाइन टू स्टार्ट एट एनी एज. जैसे कि हमने वो देखा भी यहाँ पर कि अगर करियर ब्रेक है या ट्रांजिशन ले रहे हैं, यू विल हैव अ गुड रीजन टू जस्टिफाई इट, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, जस्ट गो अहेड विद इट. If your company is not giving an experience certificate and having only 3 to 4 years of bank statement in that experience, to 12 years or only 3 to 4 years, no, you cannot reduce your number of experience. Don't do that. वो नहीं हो पाएगा. You can justify it saying experience letter was not available at that point of time. You can show some proof of work. You will. I'm very very sure you will have something to prove about your experience. Do that. Do not reduce the year by your own self. If later during the background check and everything, if they ask you, they will ask you, but don't do it by yourself. No, as a fresher you can't. That's the hard reality. As a fresher you can't, but once you make the first switch, first company, you can. It's fine. Okay. Share this PDF, share this PDF, share this PPT. Yes. गैप होने के बाद आप लास्ट सीटीसी से चेक कर सकते हो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, विच इज फाइन. एंड ऑल्सो दोज काइंड ऑफ रोल्स कहीं कहीं पर मेंशन भी होता है ना कि कितना एक्सपेक्टेड है. सो डू सम काइंड ऑफ रिसर्च एंड देन पुट इन द expected CTC. Yes, I am sharing the PPT right now. It is loading. ठीक है? Can you confirm if you are able to see? Jyoti, I mentioned, like, even if it is more than 1 year, it is fine to have a proper gap section given. Put a proper gap section in your resume. Justify it. I am very sure it must be for some good reason. Mention it properly. What was the reason behind it? And then, of course, like, go about it. So mention the reason. Whenever you will be taken on the call, you can justify it. What all you did at that time to improve your profile and everything, mention that. I have shared the PPT with everyone. So just go above in the chat section and confirm. Some of you are able to see it. So Irfan, if you are facing an issue, it must be an internet issue. ठीक है? Do you want to see my Naukri profile just to get an idea? And that will be the end of the session. Yes? Perfect. Again, I'm not saying it's the perfect profile, but I'm just trying to show you how it actually looks. So just a second. Perfect. So if there is someone who has not optimized their profile or haven't had a chance to like look at your profile, you will be able to see it now. Big yes. Yes, it's fine. It's for family care. It's for care. It's fine.
I will share it with the support team as well, so you will get it. Don't worry about it. Free resume optimization tool. I have a tool which I love. It's called Hiration. Search about it. I'm just closing the chat section because I do not want to miss on any questions. I'll share the screen. You're able to see you must be able to see the Naukri section right now. Just a second. Can you just confirm if you're able to see the screen? Just confirm if my screen is visible, Naukri. Yeah, perfect. So here, if you see, I have a normal version right now. My account is 100% optimized. Here, based on my job searches and all of that, I am a top candidate for 6 profiles, preferences 7, profile के basis पे 27 दिखते हैं. Then profile performance, if you see, I have been appearing in 583 searches. Recruiter action, 47 recruiters ने action लिया है इस profile में. And all of this is happening even if I'm not a pro user, like a pro user here. So if you want to see the profile and how to optimize the profile, I'm just showcasing it and I've put in some random numbers at the moment because I do not want to reveal the numbers. So here is the resume. Here is the resume headline, skills, employment, how much like time I have mentioned and all of that, notice period, everything is pretty clear. So if there is someone who wants to reach out to me, I think they will be able to see all the results and hence skills, last used, latest used, all of that, work sample, my career profile in general, my personal details, and everything is mentioned over here. So you have all of these sections which you can take into account and you can actually work on. And this is how it basically functions. If I go to the Naukri main page, this is all what I see. And this is something which is which should be updated if you are updating your profile. So yes, like this is how actually it looks like if you haven't seen it before. And yes, you can actually make it 100% optimized, which I have made it, and I'm not a pro user. So if I can do it, you all can do it as well. It is definitely good, Bhupendra ji. It is perfect. Download it and then you should be able to see the presentation. Yeah, perfect. Should we call it a day then? It's a Sunday afternoon. एंड हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइम बिताया है कुछ नया सीखने के लिए भी. सो आई एम प्रिटी ग्लैड अबाउट इट. यस, थैंक यू. थैंक यू सो मच. बिफोर यू ऑल लीव, कैन यू जस्ट पुट इन वन लाइन? कैन यू जस्ट पुट इन वन लाइन व्हाट डिड यू रियली लर्न टुडे? कोई एक चीज जो आपने आज नई सीखी है. Please reach out to the support team. I'll share the PPT with them. Don't worry about it. Don't worry. And if you want, update करना important. I think that is it. If you know that update करना important है, वो हो जाएगा फिर. Perfect. If you have any doubts, any queries, if you want to schedule a session on LinkedIn, on Naukri, we do a session on resume also. Please feel free to reach out to the support team. They will help you out. If you are facing some issues with the presentation, I will share it with the team as well. They will be able to share it with you. Today, I'll change the headline. All the best. All the best, everyone. Thank you so much. And let's call it a day. All the very best. Bye-bye.